आपने मेरा और मेरे डेलीगेशन का स्वागत किया, इसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले वर्ष मेरी यात्रा के दौरान आप स्वयं एयरपोर्ट पर मुझसे मिलने आए थे। आपने जो सम्मान दिया, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा अपने पद का कोई सबूत नहीं हो सकता। एक भाई का भाई से मिलना इतना सहज, ये मेरे लिए हमेशा हमेशा हृदय को छूने वाला रहा है। मुझे आपसे हमेशा एक भाई की तरह प्यार मिला है, अपने पद का प्यार मिला है, और वो मेरे व्यक्तिगत जीवन की भी बहुत बड़ी अमानत है। हर मुलाकात में मैंने भारत के प्रति आपके स्नेह और निजी प्रतिबद्धता को महसूस किया है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से हमारे संबंधों का विस्तार हुआ है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपकी विजनरी और बहुत क्लियर थिंकिंग ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से भारत का हर व्यक्ति आपको एक सच्चे मित्र के रूप में देखता है। COP28 की भरसक तैयारियां आपके नेतृत्व में चल रही है। मैं आपके निमंत्रण के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और मेरे लिए यहाँ आने का मैं मौका ही ढूंढता रहता हूँ। और ये COP20 में भी मैंने मन बना लिया है, मैं बिल्कुल आपके बीच में रहूंगा, और मेरे लिए जो भी अपेक्षा होगी भारत का एक कमिटमेंट है, क्योंकि दुनिया में इतने बड़े संकट को हम जैसे दोस्त ज्यादा समझते हैं, और इसलिए हम सब मिलकर के उसके रास्ते भी खोज सकते हैं। हमारा आर्थिक सहयोग भी निरंतर प्रगति हो रही है। पिछले वर्ष फरवरी में हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। हमने इस ऐतिहासिक समझौते पर मात्र 3 महीने में रिकॉर्ड समय पर सहमत हुए। ये आपके क्लैरिटी और कमिटमेंट के बिना संभव ही नहीं, और इसके लिए मैं आपका जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है। इस समझौते के बाद एक साल में हमारे द्विपक्षीय व्यापार में 20% की वृद्धि हुई। ये और हमने पहली बार $85 बिलियन का आंकड़ा पार कर दिया है, और जल्दी ही हम $100 बिलियन का लक्ष्य भी हासिल करेंगे। और मैं तो चाहता हूं कि G20 के पहले हम एक बार इस लैंडमार्क को पार कर सकते हैं। अगर हम तय करें तो कर सकते हैं। और ऐसे दोनों देशों के बीच निवेश के लिए भी नए अवसर उत्पन्न हुए। UAE का भारत में सबसे चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टर देश है। UAE की कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, स्टार्टअप जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में भारत में निवेश कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि भारत का आज का स्टार्टअप वो कल का यूनिकॉर्न है, उसकी गारंटी। अरे पर यूनिकॉर्न बना तो देश दुनिया की इकोनॉमी को टेक्नोलॉजी की दुनिया में नए तरीके से लीड करने वाला है, और उसमें आपका सहयोग एक बहुत बड़ा मजबूत फाउंडेशन तैयार कर रहा है। ADI के द्वारा गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना ऑफिस बनाने के लिए हमने हमारे बजट में विशेष प्रावधान रखा है। हम गिफ्ट सिटी में डाटा एम्बेसी खोलने के आपके प्रस्ताव का भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और मुझे लगता है कि डिजिटल एम्बेसी, डेटा एम्बेसी अपने आप में एक पाथ ब्रेकिंग व्यवस्था विकसित होगी।
वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार हम अपना सहयोग और मजबूत करने के लिए नए इनिशिएटिव ले रहे हैं। दोनों देशों की करेंसीज में ट्रेड सेटलमेंट के लिए आज किया जा रहा एग्रीमेंट हमारे मजबूत आर्थिक सहयोग और आपसी विश्वास को दर्शाता है। और इसका महत्व कितना है कि आज हमारे आरबीआई के गवर्नर भी यहाँ मौजूद है, हमारी फेडरल बैंक के चीफ का यहाँ आना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। इससे आपसी व्यापार और निवेश को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। और मैं मानता हूं कि पोस्ट कोविड एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शेप ले रहा है। ये घटना भी इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को शेप दे देगा, निमित्त बनेगी, ऐसा मैं देख रहा हूं। हम भारत के यूपीआई और यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ने पर बनी सहमति का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमें खुशी है कि सेंट्रल बैंक के मैसेजिंग सिस्टम को भी जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। रुपे कार्ड को भी यूएई में लॉन्च करने पर कार्य बढ़ाया जाएगा। यह हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी में मजबूत सहयोग का जीवन उदाहरण है। ऐसे भिन्न सहयोग हमारे संबंधों को यूनिक बनाते हैं और उसमें आपके नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं फिर देशवासी इस गर्व भरे जोश से मेरे स्वागत के लिए और इतने कम समय में इतने महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। And we just heard, in fact, the joint statement coming to light from of India and the UAE, where in fact the Prime Minister has also spoken about the partnership between India and UAE, and in fact he has stressed upon the fact that India and UAE can fight any problems and can overcome any challenges, since India sees UAE as a true friend, is something that has been said by the Prime Minister as well, calling it a bond of brotherhood. And he has of course also said that the welcome that he has been given also shows a very strong bond between the two nations. In fact, let me also bring in our senior executive editor Abhishek Kapoor on the broadcast. Abhishek, we're looking at these images, we're listening to the joint statements being given, and this specifically the statements being made by the Prime Minister Narendra Modi, who has in fact said that this is a strong bond that both the countries really share. In fact, this is a bond of brotherhood, and that India sees UAE as a true friend, and that partnership of India and UAE can fight any problem or overcome any challenges. Please elaborate more on these statements that are being made, and also the kind of relationship between India and UAE that we are seeing with the Prime Minister's visit this time. Well, just looking at the pictures, Priyanka, the manner in which Prime Minister spoke extempore, though he has some points before him, the manner in which he has done some target setting in terms of, when he mentioned that India-UAE two-way trade is already $85 billion, and can we set a benchmark of attaining $100 billion by the time the G20 summit happens? And remember, the G20 summit is in September, so that gives you an idea of the kind of ambition that's really fueling this partnership. And the tying of bands that we saw between Prime Minister and Mohammed bin Zayed Al Nahyan, the president of UAE, and the chemistry, the body language, I think this is shaping up to be perhaps the most seminal partnership that India has had developed. And in good measure, it's because of the kind of personal chemistry that the Prime Minister, the personal bond that the Prime Minister builds. We saw that in the case of Emmanuel Macron yesterday in Paris. We are seeing it now in the case of Mohammed bin Zayed Al Nahyan. He's known as MBZ, like the Crown Prince of Saudi Arabia is known as MBS. And both between them, they have been reforming their respective societies and nations, their laws, and making them more modern, more liberal, and more open. And so I think in that context,
they're looking east towards India as a source of strength is something which I think is very visible in this visit, in these pictures that are coming in. The Prime Minister spoke from his heart, and though we are going to get the Mohammed bin Zayed comments as well, what is important is that this is a relationship which has got really strengthened over the last few years, particularly since 2017 when it was elevated to comprehensive strategic partnership, subsequent to which we have seen 100 plus fugitives of law of India being repatriated or extradited by the United Arab Emirates, including Christian Michel, for example, and many others belonging to the Islamic State. And these reformed Arab monarchies believe that they don't want anything to do with the kind of extremism that had come to be associated with Islam in the unfortunate period of 1990s and 2000s. What happened in 1980s and 90s, culminating with the 9/11 terror attacks. So obviously, a lot of thought has gone into this reformist zeal that we are seeing, and this outreach. It's a two-way outreach, as much from the Arab side, as much from Indian side, by Prime Minister Modi and his government, looking at the opportunities that open up if you engage with this geography. So I think that's what is visible in these pictures, and we are yet to get the details of the MOUs that have been signed. For the fact that RBI governor, who is actually supposed to be in Gandhinagar for the central bank governors meeting of the G20, happens to be in Abu Dhabi, clearly gives an indication of the kind of importance that's being attached by both the sides to the relationship. Oh, absolutely, Abhishek. And because you mentioned that, and we are looking at the joint statement as well, where in fact this was mentioned that the bilateral trade between the two countries has also risen by 20%, and that there is $85 billion of trade that is soon to be achieved, and the target is about $100 billion worth of trade as well. So these are the statements that are coming to light, and that along with that, the kind of statements about the strong bond of brotherhood that is being called by the Prime Minister as well. And as you touched upon the fact that there will be MOUs with respect to several industrial sectors as well. If you could elaborate upon that, and what exactly does this really mean when it comes to both the countries, for both the countries going forward? So what this means is that there must be a roadmap in the mind of these two leaders, and that's why we are seeing this frequent these frequent meetings that are happening. Remember, Prime Minister was returning from France, and yet he has decided that even if for 5-6 hours, he would take a pit stop in Abu Dhabi and engage with the leadership. And it so happens that there must be some understandings reached, because of which at least two of the MOUs you can see in the pictures getting signed and agreements being exchanged. In one picture, I can clearly see the governor of the Reserve Bank, Shaktikanta Das, and in another, it's Minister of External Affairs diplomat, and on both the sides. And if you look at it from the MOU signing ceremony, there is a woman representative from the side of UAE, and that's a measure of the kind of reform that's happening. So I'm sure in the talks that have happened between the two leaders, a certain roadmap for the next decade or so at least has been chalked out. All right. Thank you, Abhishek, for joining us on the broadcast and breaking down the details of those images that we're getting from the UAE with the Prime Minister's visit at the UAE, where both the joint statement